Dear students, let me describe about the various pituitary and ovarian hormonal event during oogenesis. During oogenesis, there is a little fad, but it is actually during oogenesis. It is more important than the pituitary hormonal events or hormonal event during the spermatogenesis. It is very important. It is too much important than the hormonal events of spermatogenesis. Actually, there is some common similarities, some common points regarding the hormonal events in the spermatogenesis and oogenesis, but there are so many complex concepts in the oogenesis that make it crucial. Actually, the study of biology is not a very harder, but some of the points is need to be understand, and if the concept is clear, then you need to explain in your own language without any help of the notes that I will give you daily along with the video lectures. But in this video we will focus only whatever the exact concept, whatever the exact points happened during the oogenesis. Keep in mind, actually the oogenesis and spermatogenesis, the story of oogenesis and spermatogenesis begin from the very important gland known as the hypothalamus gland, known as the hypothalamus gland. It means in that case, that is in case of spermatogenesis, the overall process of hormonal events begin from the brain region, and same things in the hormonal events of oogenesis will begin from the brain region, but that was actually from the hypothalamus. And in this video lectures you can see the first gland that involved in the process of oogenesis is hypothalamus, because it controls the pituitary. So there is no direct beginning of the overall topics from the pituitary. It is through the hypothalamus. Listen carefully. What was happened during the spermatogenesis? Keep in mind and learn what was happened over there. That was actually very special hormone secreted by the hypothalamus gland, that was actually GnRH. And in that video lectures I have give you the different naming of different terminology regarding the GnRH. Why do GnRH so called? Because of having its specific name. The name of GnRH is the gonadotropin releasing hormones, as I have described in the previous video lectures. But in this way there is the same meaning. The GnRH will have the similar meaning, that is the gonadotropin releasing hormones. Now back to what happened. What are the functions of gonadotropin in this oogenesis? Same functions. It stimulates the anterior pituitary, that is known as adenohypophysis of pituitary gland. Listen carefully. In that video, in the video of spermatogenesis, I had draw the different lobes of pituitary gland, that is the anterior lobe and posterior lobe. And in this way there is no need to draw, because you have a pre-mindset regarding the lobe of pituitary, that is anterior pituitary there is the adenohypophysis, posterior pituitary there is the neurohypophysis. Now back to what happened when the adenohypophysis received the GnRH from hypothalamus. This will be the hypothalamus. When the adenohypophysis received the GnRH, then it is the same function, it has the same function as the function was in spermatogenesis. It secretes two type of hormones, the LH and FSH. LH and FSH hormones. The meaning of FSH and LH will be similar as like in the video of spermatogenesis, that is follicle stimulating hormones and luteinizing hormones. Listen carefully. That video, that is spermatogenesis video, and that concept was too much easy, that is 10 times easier than the oogenesis. But
keep in mind this video and this concept is not easier as like spermatogenesis in order to understand. So be focused up to 5 to 10 minutes in upcoming 5 to 10 minutes is very crucial for you. So be focused, be concentrate, use headphone and choose the very specific environment in order to take the different kinds of concept clearance. लिसन केयरफुली, आप कॉपी बुक्स लेकर के, कॉपी और पेन लेकर के बैठे, एक एक पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करते हुए आप एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते जाएं तो बेहतर होगा. लिसन केयरफुली, कैसे नोट करेंगे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट जीएनआरएच, पहला पॉइंट खत्म आपका. दूसरा एंड जीएनआरएच फ्रॉम, दूसरा पॉइंट जीएनआरएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द एंटेरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस इन ऑर्डर टू सीक्रेट द एफएसएच एंड एलएच. फुल फॉर्म भी वहां पे आप लिख लीजिएगा. थर्ड पॉइंट से आप कैसे लिखेंगे, यहां से आप फोकस करेंगे. लिसन केयरफुली, एफएसएच हार्मोन एक्चुअली it responsible to stimulate the follicular cells. Listen carefully, it responsible to stimulate the follicular cells, that is actually responsible to stimulate the synthesis of फॉलिक्यूलर सेल्स. कौन कौन से भाई फॉलिक्यूलर सेल्स बनाता है एफएसएच हार्मोन्स? लिसन केयरफुली, द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल. इसके बाद कोई ऐसा सेल नहीं मिलेगा ग्राफियन फॉलिकल के बाद जिसके लास्ट में फॉलिकल लगेगा. इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल एक खाली डब्बे की तरह से, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, खाली डब्बे की तरह से वो बच जाता है ओवरी में. दैट इज एक्चुअली द कार्पस ल्यूटियम. ओवा रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल से क्या बच जाता है? खाली डब्बा, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. यहाँ पे फोकस करना है. तो प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte के ऊपर, सेकेंडरी फॉलिकल भी प्राइमरी oocyte के ऊपर, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में, ये प्रीवियस वीडियो में आपको मिल गया होगा प्रोसेस ऑफ oogenesis में. उसके बाद आप ये जितना जहां से आप फॉलिकल वर्ड आप सुन रहे हैं ना, प्राइमोडियल फॉलिकल के पास से, जहां से आप प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल वर्ड आप जहां सुन रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द एफएसएच हार्मोन्स. नाम देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. आज पता चला है कि ये क्या है, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स. और फॉलिक्यूलर सेल्स कौन कौन है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स. इसको आपको फोकस कर लेना है. लिसन केयरफुली, द सेकेंड फंक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन्स. एफएसएच हार्मोन्स इट स्टिमुलेट द granulosa cell. Listen, it stimulate the granulosa cells. अब granulosa cells कहाँ है भाई? ये आप पढ़े होंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी जो oocytes है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्पेशल granulosa cells ऐसे डिपॉजिट हो गए थे. ये क्या था? ये था तुम्हारा प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा. जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जो भी फॉलिक्यूलर सेल्स बनाएंगे उसके सेंटर पे ये क्या है? ये हमारा मेन गैमीट्स है. मेल गैमीट्स नहीं, यही हमारा मेन गैमीट्स है. ये क्या हो सकता है? oocyte सेल. ठीक है, oocyte सेल्स. ये अभी आपका प्राइमरी या सेकेंडरी oocytes हो सकता है. ठीक है, लेकिन इसके बाहर जो स्पेशल सेल्स आपको गैदरिंग दिख रहा है, मास दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली द ग्रेनुलोसा सेल्स. इस ग्रेनुलोसा सेल्स पे कौन? एफएसएच हार्मोन्स इसकी सिंथेसिस भी करता है. यानी कि नंबर 1 है तो 2, 4, 5, 6 ऐसे इसको बनाता जाएगा. बट इस पे अपना काम करके इससे एक स्पेशल टाइप का हार्मोन्स बोलता है सीक्रेट करने के लिए. दैट हार्मोन्स इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन्स. लिसन केयरफुली, बात को समझें. Not only the FSH hormones is responsible for the formation of primary, secondary, tertiary Graafian follicle, it also able to secrete the estrogen hormones, extract the estrogen hormones that are actually hidden inside the granulosa cells, and later whatever the function of estrogen hormones it will be understood. But keep in mind, estrogen hormones is secreted from which part of ovary? That is from the follicular cells. फॉलिक्यूलर सेल्स में कौन से सेल से? ग्रेनुलोसा सेल से. लिसन केयरफुली, ये क्या है? ये या तो प्राइमरी फॉलिकल या तो सेकेंडरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, कुछ भी हो सकता है. बट कीप इन माइंड द बेसिक फंक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन्स इज टू
First function, synthesis of follicular cell, and second function, the synthesis and secretion of estrogen hormones from the granulosa cells. Keep in mind, it only stimulate the FSH hormones is responsible to stimulate the granulosa cells of follicular cells फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स. मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रीट कौन करता है? ग्रैनुलोसा सेल्स. और इस काम के लिए कौन कहता है सिक्रीट करने के लिए? एफएसएच हार्मोन्स. अब आपको प्री अंडरस्टूड है, आप पहले से जानते हैं एफएसएच हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? लिसन केयरफुली. इट मेंटेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल. लिसन केयरफुली. इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द maintenance of secondary sex characters in female. What is the secondary sex characters and primary sex characters in female? Listen carefully. In male and female, the primary sex characters is actually the gametogenesis. In male, the primary sex characters is spermatogenesis, and in female, the primary sex characters is the oogenesis. So the main function of primary sex characters is to secretion and formation of ova. But whatever the secondary sex character, that is actually performed by the estrogen. Keep in mind, apart from the ovulation and synthesis of ova, the other morphological change that can be seen during the puberty phase is known as secondary sex characters. Listen carefully. That is actually due to the estrogen hormones. And the second function, it responsible for the secondary sex characters and also maintain the secondary sex characters in female. Listen carefully. And the second function of estrogen hormones, it responsible for the proliferation of endometrium wall of uterus. Proliferation of endometrium wall of uterus. Listen carefully. Uterus is actually earlier remain as a cavity, but when the ovary secrete the estrogen hormones, estrogen hormones from the granulosa cells, then there is the thick blood lining create. Listen carefully. Estrogen only create, only construct, only grow the thick blood lining of endometrium wall of uterus. That is the thick blood lining. That thick blood lining is known as mens. MENS, mens. The thick blood lining is created by the estrogen hormones. कीप इन माइंड्स, आपके घर को बनाने वाला कोई और होता है और मेंटेन करने वाला कोई और होता है. तो एग्जाम में पूछता है कि नेम द हार्मोन्स दैट फॉर्म the endometrium wall of uterus. That is undoubtedly estrogen. But name the hormones that maintain the endometrium wall of uterus. That is actually the progesterone. और progesterone की हिस्ट्री मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. But keep in mind, listen carefully. The granulosa cells has two function. Has estrogen hormones. Estrogen hormones perform two function, that maintain the secondary sex characters in female, and also it responsible for the proliferation of endometrium wall of uterus. Listen carefully. Now back to the second important events that happened after the ovulation. Listen carefully. ये क्या है? ये मैच्योर फेज है फॉलिकुलर फेज का. लिसन केयरफुली. अब यहाँ से अब इसका काम शुरू होगा. LH हार्मोन्स. ये तो FSH यहाँ तक अपना काम कर लिया. क्या किया है? FSH किया क्या है? FSH जो है फॉलिकुलर सेल्स की सिंथेसिस किया है. किसके ऊपर? ये तुम्हारे प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocytes के ऊपर. और उनको किस में कन्वर्ट किया है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर. ठीक है. और उससे क्या सिक्रीट करवा रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स. एस्ट्रोजन हार्मोन का बेसिक फंक्शन क्या है? इट मेंटेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड प्रोलिफरेट द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस. प्रोलिफरेशन मीन्स द ग्रोथ. लिसन केयरफुली. द ग्रोथ. सो इट इज ओवरऑल फिनोमिनन of whatever the function of FSH hormones. Listen carefully. Actually the video become too longer and hardly to be uploaded. Then there is need to partition in the video lectures, but the concept will be similar. Various pituitary and ovarian hormonal events. So don't forget to immediately see the video of second part.
for these kinds of concept in the second part.